Hello everyone. Very good evening to all of you. This is Ashwin Ramani, your research analyst at SBI Securities. I hope I'm audible and I hope you all are able to see my screen. If you can give me a heads up in the chat box. Radha Krishna ji is your hello sir. How are you? Good evening to you. अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, तो आप में मुझे एक बार आप चैट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप सेशन में हो करके. So we just wait for a couple of minutes. I see that people are joining in. So I think it's 4:01 now. I think by 4:03 we should be good to start with the session. Audible, Beam Singh ji saying hello, Murli Krishna ji, hi, good evening, Siddharth ji, audible, yes, we are seeing. Heaven Creator, hello sir, Devdas ji, hi sir, hi, good evening, Devdas ji. So any trades today guys? JP Verma ji, hello, good evening to you sir. So आज कुछ ट्रेड लिया आप लोग ने? निफ्टी ऑलमोस्ट 24,350 के आसपास ही रहा पूरा दिन. आज निफ्टी का एक्सपायरी था बिकॉज कल मार्केट हॉलीडे ऑन अकाउंट ऑफ महाराष्ट्र डे. अनीता जी, गुड इवनिंग टू यू एज वेल. गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग राधा कृष्णा जी जो हो गए. MS Lakshmi ji saying hi sir. Okay, great, super. So how was your trading day guys? Did you all make money, lost money? Deepak ji, hi sir. Ram Mohan Rao ji is hello sir. 24,400 put. Okay, interesting. So I think 24,350 is going to act as a immediate hurdle for Nifty is what I feel. Because पूरा दिन आज 24,350 के आसपास ही था. So Friday we'll have to see whether it goes up from 24,350 or it goes down from 350. So that is something that we'll have to see it on Friday. Dheeraj ji, hi. Gyanendra ji, good evening. Sachin ji saying lost money yesterday. Okay. Lost yesterday. Okay, no trades today. Murli Krishna ji saying profit. Okay, great, superb. So I believe you guys are trading options, index options, if I'm not wrong, Nifty options, Sensex options, or do you all trade in cash segment, swing trading? क्या prefer करते हो आप? Is there any option traders here? Because आज का जो topic है, स्पेशली अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, तो आज जो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले, दैट इज अबाउट ऑप्शन ग्रीक्स. दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इंडेक्स ऑप्शंस, ग्रेट. चंद्रा जी सेइंग इंडेक्स ऑप्शन, सिद्धार्थ जी सेइंग फ्यूचर्स. Superb. So before we start off with the session guys, I think now we are good to go with the session. So क्या लगता है आपको, how many of you all actually understand option Greeks guys? If you all can let me know in the chat box. So there are a lot of various different types of Greeks. You would have heard about something called as delta, then there is something called as theta, then there is something called as gamma, then there is something called as Vega, and then there is something called as rho. Typically these are 5 option Greeks. Journalist Avdanam ji saying do not know. Okay, no problem. Ram Mohan ji saying time decay. Yes, absolutely. Only delta, theta, gamma. Okay. So no clue about Vega and rho. Okay, good. What about others guys? How many of you all know delta, theta, gamma? Achha, how many of you all know? Actually, I'm pretty sure you all know time decay, because I think we all know, if you are an options trader, so I think time decay, so I think something that सब लोग ने experience किया ही होगा. Radha Krishna ji saying I don't know. Okay, no problem. What about others? Anyone who has an idea about what option Greeks are? Because this is slightly difficult in terms of understanding the concept, but I have some examples for all the option Greeks today, and I'll try to ensure that in the next 1 hour I'll try to simplify option Greeks as much as possible for you all. Yeah, absolutely, Chandrasekhar ji. It will be in a layman's language only. It is something that you will understand. I have tried to keep the content very easy,
and I have a lot of examples as well. So whatever Greeks that we learn, it will be accompanied with examples. Okay, so let us start off with the session, guys. So I think only few of them have replied that they know about option Greeks. So I'm assuming a majority of you all don't know about option Greeks, right? So we'll talk about key option Greeks. Hota kya hai? Option sellers mostly dependent on time decay. Yes, Ramonji, I'll come to that part as well. So we'll understand first of all what are these option Greeks. Okay. Then after we understand what are these option Greeks, we'll have to know why are these Greeks important. Okay, why is it that we need to know what is delta, theta, gamma? And thirdly, we'll try. So there are like 5 different option Greeks that we will learn today, and I'll try to explain those option Greeks with examples so that you'll understand what are these option Greeks. Okay. Now, what are these Greeks, guys? So Greeks are nothing but it refers to a group of parameters that measure risks in an options position. Okay, and now basically all these words that you see, that is delta, vega, gamma, theta, rho, these are all represented by a Greek letter. Okay. So basically, now tell me something, guys. So whenever you trade in options, can I say options where there is something called as premium that you buy and sell? Because just like अभी शेयर अभी कोई भी आप शेयर ले लो, रिलायंस ले लो या HDFC बैंक ले लो, वो हर एक शेयर का एक प्राइस होता है. दैट इज द प्राइस दैट यू बाय एंड सेल. सिमिलरली जब भी आप ऑप्शंस ट्रेड करते हो, व्हाट इज इट दैट यू बाय एंड सेल इन ऑप्शंस गाइस? Because even options has a price, and what is that price of an option called as? If you all can let me know, guys, in the chat box. Because जब भी हम options trade करते हैं, options also has a price, the price that you buy and the price that you sell. So can I say when in options there is something called as premium? I hope you all know what is premium, guys. If you all can let me know in the chat box. And let's keep the session interactive, guys. Let's keep it two-way because there'll be a lot of questions that I'll ask. So until and unless you also don't participate and answer, I wouldn't know if you have actually got the concept or not. So can I say premium is something that we buy and sell in options, guys? Now you would have wondered कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अगर आपने ट्रेड लिया हो और मान लो आपने एक ऑप्शंस में एक ट्रेड लिया हो, बट होता कैसा है कि सी ऑप्शंस बेसिकली इट्स अ डेरिवेटिव. सो डेरिवेटिव का एक अंडरलाइन होता है. सो लेट्स से इफ यू आर डीलिंग इन इंडेक्स ऑप्शन, निफ्टी ऑप्शंस, लेट्स से यू हैव बॉट अ निफ्टी कॉल ऑप्शन है. अगर आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो, यू आर एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू गो अप फ्रॉम द करंट लेवल. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि निफ्टी मान लो करंट लेवल से 100 पॉइंट ऊपर चला गया है, बट क्या प्रीमियम भी वैसे ही 100 पॉइंट ऊपर जाता है? इफ यू ऑल कैन लेट मी नो, गाइस, इन दी चैट बॉक्स. मान लो आपने कोई ऑप्शन कॉल ऑप्शन खरीदा है या कोई पुट ऑप्शन खरीदा है. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कॉल ऑप्शन समझते हैं. मान लो अंडरलाइंग आपका 100 रुपया गया है. डू यू थिंक योर प्रीमियम ऑल्सो मूव्स इन टैंडम विद द अंडरलाइन? कि मतलब यहाँ पे 100 रुपया गया तो प्रीमियम भी 100 रुपया गया. कभी आपने देखा होगा, कभी कभी शायद 100 रुपया अंडरलाइन अगर बढ़ा है तो आपने देखा होगा कि प्रीमियम से 50 रुपया ऊपर गया है. या आपने देखा होगा इतना ज्यादा मूवमेंट आ गया बट प्रीमियम शायद 20 या 30 रुपया ही ऊपर गया है. एग्जैक्टली, सिद्धार्थ जी सेइंग एवरेज 55 बढ़ता है. शायद कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि अगर अंडरलाइन 100 रुपया बढ़ गया तो आपका जो प्रीमियम है वो भी 100 रुपया बढ़ेगा. दिस यूजुअली हैपेंस इन फ्यूचर्स बिकॉज फ्यूचर्स में देयर इज नथिंग कॉल्ड एज time, because futures is basically exact replica of how the cash market is, just with the lot sizes. अगर अंडरलाइन इतना बढ़ा तो आपका फ्यूचर्स भी उतना ही बढ़ता है. बट प्रीमियम में इट इज नॉट ऑलवेज दैट. सो प्रीमियम्स माइट नॉट मूव विद द सेम अमाउंट. नाउ यू माइट बी थिंकिंग क्यों ऐसा क्यों होता है? क्यों कभी 50 रुपए ऊपर जाता है, कभी क्यों 30 रुपए ऊपर जाता है, कभी कभी क्यों एकदम सडनली ब्लास्ट हो जाता है, वो 60-70 रुपया ऊपर जाता है, राइट? सो यू वुड हैव फेस दिस, करेक्ट? सो लेट्स से आई गिव यू एन एग्जांपल नंबर 2. कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कॉल ऑप्शन लिया है, आप सोच रहे हो कि आपका अंडरलाइन ऊपर जाएगा. तो होता क्या, आपका अंडरलाइन ऊपर जाता भी है, बट वो क्या है ना, प्राइस थोड़ा सा साइडवेज ट्रेड करता है. आपने एक दिन होल्ड कर लिया, 2 दिन होल्ड कर लिया, 3 दिन होल्ड कर लिया मान लो, और प्राइस ना वही के वही पर है, प्राइस मूव ही नहीं हो रहा है यहाँ पे. क्या आप देखते हो कि प्रीमियम फिर भी 3-4 दिन के बाद, जितना ज्यादा टाइम अगर आपने होल्ड कर लिया हो, अंडरलाइन अगर ऊपर जाता भी है तो आपका प्रीमियम मूव नहीं होता है. समटाइम्स यू वुड सी द प्रीमियम डीकेइंग सो मच दैट अल्टीमेटली एक्सपायरी आते आते आपका प्रीमियम जीरो हो जाता है. हैव यू फेस्ड एनीथिंग लाइक दिस, गाइस? इफ यू ऑल कैन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. बिकॉज
आपने देखा होगा, आप जितना देर तक आप ऑप्शंस अगर होल्ड करते हो, जितना टाइम लगता है आपको ऑप्शंस होल्ड करने पर, फिर चाहे वो अंडरलाइन आपके फेवर में भी चला जाए, बट आपका जो प्रीमियम है वो डीके होने लगता है. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव फेस दिस गाइस? ग्रेट, सिद्धार्थ जी सेइंग यस. सो इसमें होता क्या है, सो जो ये जो प्रीमियम है ना सर, देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट दिस प्रीमियम प्राइजेस. सो ऐसा, इट्स नॉट ओनली द मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइन. सो अंडरलाइन का एक फैक्टर है जो प्रीमियम पे डिपेंड करता है, दूसरा एक फैक्टर है टाइम. अब मान लो अगर आप आइसक्रीम खा रहे हो, लेट्स से यू गो टू अ शॉप एंड यू बाय एन आइसक्रीम एंड यू वांट टू हैव एन आइसक्रीम. अब मान लो आपने आइसक्रीम को 30 मिनट्स तक ऐसे ही हाथ में रखा, क्या होगा? बिकॉज इफ यू हैव बॉट एन आइसक्रीम यू हैव टू एंश्योर दैट यू ईट द आइसक्रीम वेरी क्विकली, राइट? तो सिमिलरली ऑप्शंस भी ऐसा है, जब भी आप कोई ऑप्शन ट्रेड दे रहे हो, स्पेशली आप बाइंग साइड पर हो, यू वांट दैट मोमेंटम टू किक इन वेरी क्विकली. अगर प्राइस वही के वही रह गया, जैसे आइसक्रीम मेल्ट होता है वैसे आपका प्रीमियम भी मेल्ट होने लग जाएगा. सो क्या होता है, व्हाट इज द रीजन, कैसे पता चलेगा कि ये क्या रेट से मेल्ट होगा? बिकॉज इफ इवन इफ यू लुक एट आइसक्रीम, द आइसक्रीम डजंट मेल्ट ऑल टुगेदर, थोड़ा 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 आता है एंड अल्टीमेटली वो पूरा मेल्ट हो जाता है. So there is time factor that is involved, there is a direction factor that is involved, then sir, there is a volatility as well which you need to take into account of. कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ सडन इवेंट्स आ जाते हैं, या बेसिकली आरबीआई मीट हो या क्वार्टरली रिजल्ट्स हो या कंपनी स्पेसिफिक कुछ न्यूज आ जाता है, यू वुड सी एट सम डेज देयर आर प्रीमियम्स दैट मूव क्रेजीली बोथ वेज. ऊपर जाता है, नीचे जाता है, एंड द प्रीमियम जस्ट काइंड ऑफ स्विंग्स बिकॉज सडनली जब भी वॉलेटिलिटी होता है मार्केट में. So even that volatility also has an impact on the premium. And the fourth and the last point is interest rate. So अभी देखा होगा, जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या घटता है, ऐसा नहीं कि हर क्वार्टर में अभी आरबीआई का एमपीसी मीट होता है. इट्स नॉट दैट द इंटरेस्ट रेट्स चेंज वेरी ऑफन, दे यूजली चेंज. अभी हमने देखा कि 5 साल के बाद जो इंटरेस्ट रेट्स है वो कम होने लगा है. लास्ट 2 मीटिंग से 25 basis points कम होने लगा. इवन दैट इम्पैक्ट, दैट कटिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ऑल्सो हैज एन इम्पैक्ट ऑन द ऑप्शंस प्रीमियम. सो ये जो सारे फैक्टर्स है, ये सारे आपका डिसाइड करता है कि आपका प्रीमियम कैसे रिएक्ट करेगा यहाँ पे. ठीक है. सो नाउ विल गेट इनटू द डिटेल्स कि कैसे हमें पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये प्रीमियम कितना ऊपर जा सकता है, कैसे पता चलेगा डीके कितना हो सकता है, कैसे पता चलेगा इतना वॉलेटिलिटी आया तो आपका प्रीमियम में क्या इंपैक्ट होगा. सो ये सब इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है. और ये आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा? ऑल दीज इंफॉर्मेशन यू विल गेट इट इन ऑप्शन ग्रीक्स. Is that part clear, guys? All good until now? If you all can give me a heads up in the chat box. Okay. Now, let me know, guys. So now we are starting with the option Greeks, guys. So there are 5 Greeks that we will discuss. The first Greek that we are going to discuss is called as delta. ठीक है, जो सबसे पहले जो हम लोग जो ग्रीक डिस्कस करने वाले हैं वो ग्रीक का नाम है डेल्टा. नाउ व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा सेज it measures the rate of change of options premium based on the directional movement of underlying. Now can anyone tell me कि ये जो फर्स्ट लाइन जो मैंने यहाँ पे जो पढ़ा है उसका क्या मतलब है? डेल्टा बेसिकली आपको ये बताता है कि आपका अंडरलाइन मूवमेंट होने से आपका प्रीमियम्स में कितना चेंज होगा. कैन एनीवन टेल मी ये जो फर्स्ट लाइन है उसका क्या मतलब आपको समझा यहाँ पे? सो डेल्टा मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शंस प्रीमियम बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अंडरलाइन. कैन एनीवन हेल्प मी विथ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन? इफ यू ऑल कैन लेट मी नो गाइस इन द चैट बॉक्स. नाउ द आंसर इज इन द सेकंड लाइन गाइस. अगर सिंपल टर्म में बोलूं, हर एक स्ट्राइक प्राइस का ना एक डेल्टा होता है, चाहे वो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस हो या आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस हो या इन द मनी स्ट्राइक प्राइस हो. एवरी स्ट्राइक प्राइस विल हैव दीज ऑप्शन ग्रीक. हर एक डेल्टा आपको ये बताता है कि कितना पॉइंट से आपका प्रीमियम ऊपर नीचे होगा बेस्ड ऑन एवरी 1 पॉइंट चेंज इन अंडरलाइन. इज द सेकेंड लाइन क्लियर गाइस? डेल्टा आपको ये बताता है कि आपका प्रीमियम कितने से चेंज होगा बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन एवरी 1 पॉइंट चेंज इन अंडरलाइन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. कैन एवरीवन सी माय स्क्रीन गाइस? इफ यू ऑल कैन गिव मी अ हेड्स अप इन द चैट बॉक्स. क्या सभी लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे? लेट मी नो इफ माय स्क्रीन इज विजिबल गाइस. तो मैंने क्या कि आज अगर आप देखोगे निफ्टी 24,334 पे क्लोज हुआ है, तो मैंने यहाँ पे ऑप्स्ट्रा पे जाके 24,350 का कॉल ऑप्शन ऐड किया है मैंने यहाँ पे. ठीक है, और कौन सा एक्सपायरी लिया? आई हैव टेकन 8th में एक्सपायरी.
दैट इज जो मेरा जो नेक्स्ट मंथ अभी जो नेक्स्ट वीक का जो एक्सपायरी है, क्योंकि आज एक्सपायरी हो गया, नेक्स्ट वीक का 24,350 कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो कितना है यहाँ पे? कैन आई से इट इज अराउंड 211 रुपीज. Now this is the premium for 24,350 call option. Now when I go this and I click on Greeks, जैसे मैं यहाँ पे Greeks पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा IV. IV stands for implied volatility, delta, theta, gamma and vega. We'll discuss one by one. Now for 24,350 call option guys, my delta is 0.45 और मेरा जो प्रीमियम है वो 211 रुपया है. नाउ कैन एनीवन टेल मी, अगर 24,350 कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.45 है, इसका क्या मतलब है? अच्छा, आई विल गिव यू वन क्वेश्चन. मान लो अभी 24,350 यार, अभी निफ्टी भी आसपास वही पे है, 24,334 पे. मान लो अंडरलाइन करंट लेवल से 100 पॉइंट ऊपर जाता है. फ्रॉम 24,334 लेट्स से द अंडरलाइन गोज 100 पॉइंट्स हायर. तो जब अंडरलाइन आपका 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो जरूरी बात यह है कि आपका जो प्रीमियम है जो 211 रुपया है वो भी ऊपर जाएगा. बट कैन यू टेल मी प्रीमियम कितना ऊपर जाएगा अगर मेरा जो अंडरलाइन है वो करंट लेवल से 100 रुपया ऊपर जाएगा? यहाँ पे द डेल्टा फॉर 24,350 आप यहाँ पे देख सकते हो, डेल्टा 0.45 है. मतलब अगर 100 रुपया का मूवमेंट आया इन द अंडरलाइन फ्रॉम द करंट लेवल्स, कैन एनीवन टेल मी 100 रुपया के बाद ये जो 211 का जो अभी का प्रीमियम है वो कितना दिखेगा आफ्टर 100 पॉइंट्स मूवमेंट इन दी अंडरलाइन? लेट्स से हाउ मेनी ऑफ यू ऑल कैन गिव मी द राइट आंसर. मुझे बताना कि 100 पॉइंट होने के बाद ये 211 का जो प्रीमियम है 24,350 का, वो प्रीमियम कितना होगा? दैट 211 विल चेंज टू हाउ मच? लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू ऑल कैन गिव मी द राइट गेस. Yes, Arvind ji is saying obviously it will change by 45 points. So every 100 points अगर movement होता है underlying में, the premium will change by 45 points because the delta is 0.45. तो 100 रुपया underlying का movement आया, मेरा premium change होगा only by 45 points. Now you add 45 to 211. How much is that? 221, 231, 241, 251, 256. Siddharth ji is saying 256. Devdas ji is 260. Ram Mohan ji is saying 260. Superb. Chandrasekhar ji is saying no, 50 rupees is a wrong answer. Chandra ji. Delta is 0.45. Yes, Deepak ji, 255 is the right answer. Superb. Very good. So let me take you through an example here. So this is what the example is. I hope you all can see my Excel screen. क्या सभी को मेरा यहाँ पे Excel screen दिख रहा है? If you all can let me know. So 24,350. So the delta we just saw it is 0.45 guys. और अभी जो प्रीमियम चल रहा है वो 211 है. मान लो you are expecting Nifty to rise by 100 points. That is 24,350 से 100 रुपया का अगर मूवमेंट आ गया तो कैन आई से 24,350 में अगर आप 100 रुपया ऐड कर दोगे तो आपका निफ्टी सीएमपी हो जाएगा 24,450. आपका डेल्टा कितना है? चेंज कितना हो गया? 100 पॉइंट. आपका डेल्टा कितना है? 0.45. So can I say 0.45 into 100? That means your premium will change by how much? 45 rupees. So your old premium was 211 and you add 45 to this. Can I say you will get 256 here? Understood delta guys? If you all can let me know in the chat box. Now has everyone got delta guys? क्या मुझे आप चैट बॉक्स पे बता सकते हो यहाँ पे? अब यहाँ पे जो भी जो एट द मनी ऑप्शंस है, वेदर इट इज कॉल ऑप्शन और वेदर इट इज एट द मनी पुट ऑप्शन, ऑल द एट द मनी ऑप्शंस विल हैव अ डेल्टा ऑफ 0.5. मतलब 0.5 के आसपास होगा. जो भी आपका आईटीएम ऑप्शंस है उसका अगर आप देखोगे डेल्टा विल बी क्लोजर टू 1. मतलब आप 0.6 होगा, 0.7 होगा, 0.8 होगा. आईटीएम का यूजुअली जो डेल्टा होता है वो ज्यादा होता है. यस, डेल्टा विल आल्सो चेंज विद टाइम. आई विल कम टू दैट पार्ट परीक जी. वो गामा से हमें पता चलेगा. एंड ओटीएम ऑप्शंस हैव डेल्टा क्लोज टू 0. तो अगर आप देखोगे ओटीएम में 0.3 का होता है, 0.2 का होता है. नाउ टेल मी
ऐसा कभी हुआ है आप लोग के साथ कि मान लो आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है, भले ही निफ्टी ऑप्शंस हो, अभी चल रहा है 24,350, आप क्या करते हो, एकदम दूर वाला स्ट्राइक प्राइस लेते हो आउट ऑफ द मनी का, बिकॉज वो प्रीमियम एकदम सस्ता होता है, राइट? ताकि सस्ता होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी सस्ता होगा, बिकॉज ओटीएम ऑप्शंस का यूजुअली अगर आप प्रीमियम देखोगे तो सस्ता होता है. बट नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ ट्रेडिंग इन ओटीएम ऑप्शंस ऑन इंट्राडे बेसिस? कैन एनीवन टेल मी इसमें क्या हो सकता है? अभी आपको डेल्टा की तो समझ आ गई, आपको मालूम है एट द मनी ऑप्शंस अगर 100 पॉइंट आया तो एटलीस्ट 50 पॉइंट से आपका जो है प्रीमियम है वो मूव होगा. आईटीएम ऑप्शंस विल इवन मूव फास्टर, फॉर एवरी 100 पॉइंट्स योर प्रीमियम विल मूव बाय 60-70 पॉइंट्स. बट ये सस्ते ऑप्शंस के चक्कर में जो अ लॉट ऑफ पीपल ट्रेड ओटीएम ऑप्शंस, ओटीएम ऑप्शंस बिकॉज प्रीमियम सस्ता होता है. बट द प्रॉब्लम विद ओटीएम ऑप्शंस इज, कैन आई से, उसका जो डेल्टा है वो बहुत कम होता है. लेट्स से 0.2 होगा, इसका मतलब 100 रुपया ऊपर गया तो भी आपका जो प्रीमियम है वो 20 या 30 पॉइंट से ही ऊपर जाएगा. So on an intraday basis, guys, which options is better according to you? Should you be dealing in at the money options or should you be dealing in out of the money options? Because अगर आप देखोगे out of the money options, the delta is not very much. It is very closer to zero. तो अगर आपको underlying में अच्छा movement भी आ गया तो उसमें दिक्कत क्या आएगी कि आपका जो प्रीमियम है वो इतना मूव नहीं होगा. अगर आपने देखा, अगर वो आउट ऑफ द मनी अगर जाता भी नहीं है, अल्टीमेटली आउट ऑफ द मनी का जो है वो प्रीमियम है वो अल्टीमेटली जीरो हो जाता है. सो वेन एवर यू डील इन ऑप्शंस गाइस, अगर आप पर्टिकुलरली अगर आप इंट्राडे बेसिस पे ही देख रहे हो, either you can stick with ITM or you can stick with ATM guys. One of the reasons is because the delta is usually higher for ITMs followed by ATMs. अब जितना दूर जाओगे स्ट्राइक प्राइस का, आपको सस्ता तो लगेगा, बट अगर वो मूवमेंट नहीं आएगा अल्टीमेटली आपका डेल्टा भी इतना इसका ज्यादा नहीं होता है, अल्टीमेटली आपका वो पोजीशन इतना हेल्प नहीं करेगा. Is that part clear, guys? Is the delta part clear? Great. Murthy ji saying at the money. Ram Mohan Rao ji is also saying at the money. So delta also gives you an idea of which is the strike price that you need to select. अब समझ में आ गया कि इंट्राडे में क्यों बोलते हैं कि आप एट द मनी लो या आप ज्यादा दूर मत जाओ, बिकॉज आप जितना ज्यादा दूर जाओगे एक तो डेल्टा विल कम इनटू योर प्ले, और दूसरा भी जो नेक्स्ट आएगा ना वो तो और भी दर्दनाक है. Is the delta part clear, guys? If you all can give me a heads up in the chat box. So this is the first Greek. ये जो पांचों ग्रीक है ऐसा ही है, उसमें there is only one option Greek which is gamma, that will be slightly challenging. Apart from that, the rest four Greeks are very easy, guys. Can I get a heads up from everyone in the chat box? ये delta part clear है? It's very simple. Delta. Now how to remember this? D for direction and D for delta. So that's how you remember कि अगर 100 पॉइंट ऊपर तो मेरा प्रीमियम कितना मूव होगा. आइडियली दैट इज व्हाई वी स्टिक विद ईदर एटीएम और इन द मनी. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड ऑप्शन ग्रीक गाइस, जो हमारा सबका फेवरेट है, दैट इज योर टीटा. टीटा आई थिंक वी ऑल नो कि टीटा मतलब क्या है. द बेस्ट एग्जांपल फॉर टीटा इज योर आइसक्रीम गाइस. You buy an ice cream, you have to eat that ice cream as soon as possible, because the more longer you hold your ice cream, chances are that ultimately क्या हो जाएगा, वो प्रीमियम आपका जीरो होने लग जाएगा. सो टीटा, टी स्टैंड्स फॉर टीटा डीके, टाइम डीके, एंड टी स्टैंड्स फॉर टीटा. सो दैट्स हाउ यू रिमेंबर. सो डी फॉर डायरेक्शन, डी फॉर डेल्टा, टी फॉर टाइम डीके एंड टी फॉर टीटा. इसका बेसिकली इट मींस, टीटा का मतलब है कि मान लो आपने कोई पोजीशन लिया है, कॉल ऑप्शन लिया है, वही एग्जांपल लेते हैं 24,350 का, और मान लो प्राइस ना ऊपर गया ना नीचे गया, एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट, द प्राइस इज ट्रेडिंग इन रेंज, ना प्राइस ऊपर जाता है ना नीचे जाता है. आपने सोचा चलो कल जाएगा ऊपर, होल्ड करके देखता हूँ, कल भी वही सीन, पूरा दिन कुछ नहीं हुआ. आपने सोचा चलो और एक दिन रुकता हूँ, एक्सपायरी के लिए अब 8 दिन बाकी है, एटलीस्ट 2-3 दिन होल्ड करता हूँ. 2-3 दिन होल्ड करते हो, कुछ मूवमेंट नहीं आता है, और आप देख रहे हो अरे जो 211 का जो प्रीमियम था ये तो अभी आ गया 180, कल देख रहे हो ये आ गया 150, परसों देख रहे हो आ गया 110. कैन यू सी ग्रेजुअली, आपने देखा होगा अगर आप जितना ज्यादा होल्ड करोगे, सी ऑप्शन बायर के लिए जो टीटा है ना, ऑप्शन बायर के लिए एनिमी है, बट वही ऑप्शन सेलर के लिए टीटा दोस्त है. डू यू ऑल अग्री विद इट? बिकॉज ऑप्शन सेलर तो चाहेगा कि उसका प्रीमियम गिरे, सो the option seller will sell first and then buy back at a lower price. But for an option buyer, you have to buy first and then sell at a higher price. That's how you'll make money, right? So Theta is a friend of an option seller, but is an enemy of an option buyer, guys.
It's a very simple theta. So let us see with the help of an example. Let me go to my Opstra site. वही अगर हम देखेंगे 24,350 का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कितना है यहाँ पे, इट्स अराउंड 211. Now, what is the theta that you see for 24,350 guys? If you all can let me know in the chat box. यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये जो 24,350 कॉल ऑप्शन है, यहाँ पे जो थीटा है that is -15 guys. It has to be seen daily. I think there is one question that I got. Does Greeks, every time whenever you take a position, you need to have an idea. See, you know for a fact that ATM and ITM will have a slightly higher delta, but OTM will have a lower data. So you know for a fact that you better you stick with at the money or in the money. Secondly, if you see at the money has the highest theta guys, usually out of the money will have a slightly lower theta, but in the money will have a slightly higher theta. So exactly. So now you see for at the money 24,350 जिसका प्रीमियम 211 है और theta -15. Now can anyone tell me what is the meaning of this -15? Who can let me know in the chat box कि ये जो -15 है उसका क्या इंटरप्रिटेशन है? What does this -15 mean? आज है 30th अप्रैल, हमारा जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो है 8 मई को, द नेक्स्ट थर्सडे. तो हमारे पास कितना दिन है? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we have 8 days to go for expiry guys. Now can you all tell me what does this -15 theta mean? We have 8 days to go. आज 30th अप्रैल है, हमारा जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो 8th मई को है, तो हमारे पास 8 दिन बचा है यहाँ पे. And the current premium for 24,350 call option is around 211. And मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आज के तारीख पे थीटा 15 है. And the one interesting thing about theta is as and when you get closer to expiry, अभी तो 8 दिन बाकी है तो आपका थीटा -15 दिख रहा है. वही आप लास्ट 2-3 दिन अगर आप आगे अगर आप देखोगे तो शायद ये -30, -40 एंड अल्टीमेटली आपका एक्सपायरी के दिन ये 0 हो जाता है. Very good. Murthy ji is saying it's the rate of melting. Very good, guys. So it is very simple. So let me open up my. So abhi मान लो निफ्टी का प्राइस is 24,350. So we have seen 24,350 here. The theta is -15. The premium is 211. So right now we are at 30th April. Expiry is 8th May. So we have 8 days to go. इसका मतलब है if everything else remains same guys, if nothing changes, your premium will decay by 15 points every day until expiry. So अगर आज 211 है और अगर प्राइस वही के वही पर है, the price hasn't gone up or the price hasn't gone down, there is no change in volatility, there is no change in interest rates, there is no change in underlying. If everything else remains the same, your premium will decay by 15 points. That is the status today. But do you think the same -15 will remain as and when you get closer to expiry? If you all can let me know. Because अभी 8 दिन बाकी है तो थीटा इसका -15 है. मान लो अभी सिर्फ 4 दिन बाकी है तो हो सकता है आपका थीटा विल बी ऑन अ हायर साइड. मान लो सिर्फ 2 ही दिन बाकी और थीटा विल इवन बी हायर. मान लो 1 ही दिन बाकी और थीटा विल इवन बी हायर. एंड अल्टीमेटली ऑन द एक्सपायरी डे योर थीटा विल बी द हाईएस्ट गाइस. मतलब अगर आप देखोगे जिस दिन एक्सपायरी है उसी दिन का 12 बजे से यू विल स्टार्ट सीइंग दिस टीका बोल रहा हूँ, द थीटा डीके मूवमेंट इज यूजुअली द हाईएस्ट ऑन द एक्सपायरी डे गाइस. दैट इज पोस्ट 12:30 इफ यू सी, वहां पे आप देखोगे दैट इज व्हेन यू विल सी द थीटा इज ऑलवेज एट द हाईएस्ट. इज द थीटा पार्ट क्लियर गाइस? इफ यू ऑल कैन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. तो अगर आप देख रहे हो आप सिर्फ डेल्टा ही नहीं, आपको साथ साथ उसमें थीटा भी देखना पड़ेगा यहाँ पे. इज दैट पार्ट क्लियर? सो ऐसा नहीं कि चलो 100 पॉइंट ऊपर गया तो मेरा प्रीमियम भी उतना ही 50 पॉइंट ऊपर गया. You also, one is delta, the second thing that you have to consider is also theta here. Exactly. Gajesh Kumar ji is saying if price doesn't move, options premium will decrease by 15 rupees. That is, this 15 is not constant. वो तो आज के हिसाब से because 8 दिन बाकी है, अभी सिर्फ 7 दिन बाकी है तो शायद ये बढ़ते जाएगा. As and when you move closer to expiry, the theta will keep increasing. Is the theta part clear guys? If you all can give me a heads up in the chat box. So this is what you need to keep in mind. So you need to keep in mind that holding options for a long period can result in significant losses. इसके लिए बोलते हैं अगर आप जब भी option buying करते हो आपको movement चाहिए. You need that momentum when it comes to option buying.
You can check all these Greeks on Opstra's website, guys. So if you go to opstra.defineedge, you go to builder, then you can just select any strike price. You go to Greeks and you will see all the Greeks detail here. ठीक है Chandrasekhar ji, each day the theta won't remain the same, Parik ji. As and when you move closer to expiry, the theta will increase here. How to hedge portfolio with Nifty options with examples, that is a separate topic, MG, so that we'll cover it separately. ठीक है. So like I said, theta is dynamic, guys, and it can change from day to day basis. So that is what you know. Even on that daily basis, the theta can keep changing, Parik ji. ऐसा नहीं कि आज सुबह अगर -15 है तो उतना ही होगा. It is dynamic. Like I said, theta is dynamic and it can change during the day as well. Because see, the time keeps running. As and when you move closer to expiry, there is some kind of theta effect that keeps happening. Is that part clear, guys? Is the theta part clear? If you all can give me a heads up in the chat box. All good until now. So we have discussed what is delta, then we have seen what is theta here. Let me know, guys, if y'all are with me, if you can give me a heads up in the chat box. Simple. देखो ऑप्शन ग्रीक्स इतना सिंपल है, पता नहीं बहुत लोग को इतना टफ क्यों लगता है. See, ideally, the OTM will have a slightly lower theta DKG. ITM will have a slightly higher theta, but it's usually the at the money which has the highest theta, guys. So not that you make a decision just based on theta. तो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो इंट्राडे बेसिस पे, आई थिंक यू कैन गो विद एट द मनी और इन द मनी. But usually what option sellers prefer is they usually go for deep out of the money. आपने देखा होगा option sellers को एकदम deep out of the money options वो बेचते हैं, because उसमें theta decay कम है और उसमें इतना movement भी नहीं है. The delta is also usually the lowest and theta is also the lowest here. So धीरे 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 करके वो decay आता है and ultimately option sellers benefit out of that. So option selling के लिए theta usually the out of the money options are preferred, not the at the money and in the money here. At what rate? Yes, Ram Mohan Rao ji, correct. Buying ke liye, see, buying ke liye you can stick with at the money. But if you are especially doing option selling and you want to capture in the decay, then it's better to go with a deep OTM for option selling here. Is that clear, guys? All good? Can we go to the next option Greek, that is gamma? If you all can give me a heads up in the chat box. Okay. Now let us discuss what gamma is, guys. ठीक है. Now इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा because this is slightly tricky. It is easy, but it is slightly trickier. So what gamma does is, so gamma measures the change in delta for the given change in underlying. Now can anyone tell me first line पढ़ के कि डेल्टा में और गामा में क्या फर्क है? लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू ऑल कैन आंसर दिस इन द चैट बॉक्स. डेल्टा तो बताता है कि मेरा प्रीमियम कितना चेंज होगा फॉर एवरी गिवन चेंज इन अंडरलाइंग. नाउ गामा इज टेलिंग मी, इट विल टेल मी मेरा डेल्टा कितना चेंज होगा फॉर एवरी गिवन चेंज इन अंडरलाइंग. So now can you all tell me कि क्या difference है between delta and what is the difference between gamma and how is gamma directly related to delta, guys? If you all can give me a answer in the chat box, I'll wait for your answers, guys. आपने सुना होगा, there is a lot of people they use this term gamma blast हो गया, there is a gamma spike that we have seen. So ideally जब gamma एकदम से बढ़ता है उसका impact गिरता है डेल्टा पे, और डेल्टा बढ़ता है तो उसका इंपैक्ट गिरता है अंडरलाइन के मूवमेंट पे, एंड अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट आपका गिरता है ऑप्शंस प्रीमियम पे. Who can tell me the difference between gamma and delta, guys? You can just let me know in the chat box. Wrong answers are completely fine. How different is gamma as compared to delta? So gamma answers the change in delta of an option for a given change in underlying. Can I say delta is the first order derivative of premium while gamma is the second order derivative of premium? Because गामा जितना बढ़ेगा, कैन आई से डेल्टा उतना ही बढ़ेगा, और डेल्टा मेरा जो रेट से बढ़ेगा उतना मेरा प्रीमियम भी वही रेट से बढ़ेगा.
आपने देखा होगा लॉट ऑफ पीपल दे यूज दिस टर्म कॉल्ड एज गामा स्पाइक या गामा ब्लास्ट हो गया, बिकॉज इफ गामा गोज अप अ लॉट, exactly, gamma accelerates the change in delta, and when gamma accelerates the change in delta and when delta goes up, ultimately your premiums also start moving at a faster rate. So let us understand this gamma. So got the difference between gamma and delta, guys? If you all can give me a heads up. डेल्टा आपको ये बताता है कि आपका प्रीमियम कितना ऊपर नीचे जाएगा फॉर एवरी गिवन चेंज इन अंडरलाइन, वेरएज गामा आपको बताता है आपका डेल्टा कितना ऊपर नीचे जाएगा फॉर एवरी गिवन चेंज इन अंडरलाइन। बिकॉज अगर गामा बढ़ा, डेल्टा बढ़ा मतलब प्रीमियम बढ़ा, गामा घटा मतलब डेल्टा घटा, डेल्टा घटा मतलब आपका प्रीमियम भी घटा। यहाँ पे आर यू ऑल एबल टू गेट द डिफरेंस बिटवीन गामा एंड डेल्टा, गाइस? यू ऑल लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. Now again, why at the money options and in the money options are preferred? Because if you see, gamma is always higher for at the money and in the money options because they are more sensitive to movement in underlying than the out of the money options. Because अगर आप देखोगे यूजली ये जो गामा है वो एट द मनी और इन द मनी के लिए ज्यादा हाई रहता है, इसलिए वेदर यू गो फॉर इंट्राडे बेसिस या 2-3 दिन को भी अगर आपको ऑप्शंस होल्ड करना है, एंड इफ यू आर एन ऑप्शन बायर, it is preferable that you either get into out in the money or you get into an at the money year and avoid out of the money as far as possible, especially when you are looking at option buying. वो सस्ते प्रीमियम के चक्कर में don't get into out of the money options, guys, because फिर दिन हम जो भी पढ़ रहे हैं आज वो पूरा वेस्ट चला जाएगा. Now you know how delta affects out of the money options, what is the theta effect on out of the money options, and why, what is the gamma effect here as well. Chalo, let us understand with the help of an example. Can I say Nifty current market price is 24,350 और हमने जो स्ट्राइक प्राइस लिया है वो 24,350 है. यहाँ पे जो हम लोग ने स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे देखा था 24,350 कॉल ऑप्शन. सो टेल मी गाइस, ये जो 24,350 अभी जो प्राइस चल रहा है और जो स्ट्राइक प्राइस भी है 24,350. नाउ व्हाट इज दिस 24,350 स्ट्राइक? इज इट एन एट द मनी स्ट्राइक? इज इट एन आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक? Or is it an in the money strike, guys? If you all can give me a answer in the chat box. अभी प्राइस चल रहा है 24,334, वो मैंने उसको राउंड ऑफ करके 24,350 लिखा हुआ है और मैंने जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है वो भी 24,350 है. इसका मतलब है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माय स्ट्राइक इज एट द मनी. अगर मैं मनीनेस की बात करूं कि ये आईटीएम है, ओटीएम है, एटीएम है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 24,350 इज एट द मनी. And current market price is very close to the strike price is closest to the current market price here. निफ्टी का एक्सपायरी कौन सा है? 8th में. हमने देखा था डेल्टा कितना है, डेल्टा हमने देखा था इट इज 0.45. ठीक है, अभी इसका गामा कितना है? व्हाट इज द, यस गजेश जी, आई एम डूइंग दैट. नाउ व्हाट इज द गामा फॉर 24,350 कॉल, गाइस? Murthy ji, this is not out of the, see, slightly out of the money, but I have taken 24,350. So you are right. Even if you mention out of the money, it's fine. What is the gamma, guys, for 24,350 call? क्या दिख रहा है आपको? गामा कितना है यहाँ पे? So we saw delta for 24,350 0.45. What is the gamma for 24,350 call? I want everyone to just type it out in the chat box. Can I say gamma is 0.0006? That is the gamma here. और गामा क्या बताता है? फॉर एवरी गिवन चेंज इन अंडरलाइन आपका डेल्टा कितना चेंज होगा. ठीक है, याद रखना, गामा टेल्स यू आपका डेल्टा कितना चेंज होगा फॉर एवरी गिवन चेंज इन अंडरलाइन. ठीक है, ओके. So we saw that delta is 0.45, gamma is 0.0006. The current option premium is 211. How did we get 211? हमें पता है कि premium is 211 here. Okay. The current market price is 24,350, guys. Let's say you are expecting Nifty to rise by 100 points from here. From 24,350, let's say you are expecting Nifty to go to 24,450. How much is the change in underlying, guys? If you all can give me an answer in the chat box. From 24,350, you are expecting 100 points movement. So you have the current delta, you have the current gamma, and you have the current option premium as well. Now we will see how much does the premium change.
how much does the gamma change and how much does the delta change when the price has gone up by 100 points? Because when the price goes up by 100 points, do you think this three will remain the same? क्या आपको लगता है डेल्टा 0.45 होगा अगर 100 पॉइंट मूवमेंट आ गया अंडरलाइन करंट लेवल से? Because that strike price won't remain at the money strike price only, right? It might become an in the money option. Do you all agree? अभी 24,350 में वो एट द मनी है, बट अगर 100 पॉइंट अगर मेरा प्राइस ऊपर चला गया, कैन आई से बाय सेम 24,350 कॉल ऑप्शन विल बिकम एन इन द मनी ऑप्शन उस टाइम पे 100 पॉइंट मूवमेंट के बाद? तो अभी तो डेल्टा 0.5 है, तो 100 पॉइंट के बाद 0.45 डेल्टा नहीं होगा, राइट? माय डेल्टा विल आल्सो चेंज. And how do I know how much is my delta going to change? That answer will come to know with the help of gamma here. तो हमें पता चलेगा कि गामा से कितना डेल्टा चेंज होगा और डेल्टा से हमें पता चलेगा कि हमारा प्रीमियम में क्या इंपैक्ट होगा. Now how much is the change in underlying, guys? My delta is 0.45, my gamma is 0.0006 and my premium is 211. My current market price is 24,350. Let's say I'm expecting 100 points movement from here. Let's say it goes to 24,450. ठीक है? Can I say my premium change will be 45 points? Do you all agree that अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट आया मेरा अंडरलाइंग में, can I say my premium will change up by 45 points? Can anyone tell me how did I get this 45? If you all can let me know in the chat box. How did I get this 45? Because अगर 100 पॉइंट का अंडरलाइन का मूवमेंट आया है, so can I say my premium change will be 45 because my delta was 0.45. So if you do 100 into 0.45, you will get 45 points. Yes, Rinesh ji, superb. So how much will this 211 change into? अगर अभी 211 है और मेरा डेल्टा 0.45 है और अंडरलाइन 100 रुपया से ऊपर गया है, so how much will this 211 turn into? Yes, Jawar ji, it is 45 points. Yes, Devda ji, 45 points. तो 211 बढ़ के कितना होगा 100 पॉइंट मूवमेंट के बाद? अभी तो मेरा डेल्टा 0.5 है, बट 100 पॉइंट के बाद this 211 will also change because my premium will also go up by 45 points. So can I say it will become how much? Perfect. You all are getting it. My new premium will be 256. But do you think my delta will also remain at 0.45 after 100 points movement? 100 पॉइंट अंडरलाइन बढ़ने के बाद क्या मेरा डेल्टा भी 0.45 होगा? क्या मेरा डेल्टा चेंज होगा यहाँ पे? बिकॉज 24,450 पे ये सेम स्ट्राइक जो एट द मनी था, अब मेरा वो इन द मनी हो जाएगा. हाउ मच विल द डेल्टा बी आफ्टर वी गेट एन 100 पॉइंट्स मूवमेंट इन द अंडरलाइन, गाइस? लेट मी सी हु कैन गिव मी द राइट आंसर. You have the gamma in front of you. You know underlying में 100 पॉइंट का मूवमेंट आया है. How much will the delta be at 24,450? 100 पॉइंट के बाद मेरा डेल्टा कितना होगा? It is 0.45 now. How much will my delta be at 24,450, guys? Gajesh ji saying 45.6. No. Think what is gamma. Gamma is how much your delta will change for every given change in the underlying. DKG is saying 0.5. DKG is just close. Arvind ji, no, it is not 46.5. I think DKG is saying 0.5. Siddharth ji is saying 0.5. Rinesh ji is saying minus 12. Nahi. How did you get minus 12, Rinesh ji? 0.8. No, Harish ji. Murthy ji is saying 27. No, not 27. How come 27? जावर जी सेइंग 0.55. मतलब आपने सीधा 0.10 पैसे से बढ़ा दिया. नो, आई थिंक आई हैव सीन ओनली डीकेजी एंड सिद्धार्थ जी कमिंग क्लोज टू द आंसर. सी गामा इज 100 पॉइंट के चेंज से आपका डेल्टा में कितना चेंज हुआ है. तो मान लो राइट नाउ द गामा इज 0.0006. ममता जी सेइंग 0.9. नो. कमल जी सेइंग 0.71. नो. सचिन जी सेइंग 0.6. नो.
गजेश जी सेइंग 256.6 नहीं, प्रीमियम नहीं, डेल्टा कितना चेंज होगा? अभी तो डेल्टा 0.45 है, 100 पॉइंट बढ़ने के बाद मेरा डेल्टा 0.45 से कितना होगा? सचिन जी सेइंग 0.6. No. I think DKG has got it right. I think DKG को पता चल गया यहाँ पे. अच्छा, I'll give you an hint guys. The answer is 0.51. अरविंद जी उल्टा 0.15 नहीं, जेपीजी को भी यहाँ पे 0.51 मिल गया है. नाउ थिंक गाइस, कैसे 0.51 है? सचिन जी सेइंग 0.39. नो. 0.39 यस, प्रोवाइडेड अंडरलाइंग आपका नीचे जाता सचिन जी, बट यहाँ पे आपका अंडरलाइंग बड़ा है 100 रुपया. Sudeep sir will join soon for the webinars for the ones who are asking about it. Devdas ji, yeah, Devdas ji, yes, 0.51, 45, 0.45.6, Sachin ji, that is it. That is what you're saying. 45 नहीं, 45 तो आपका premium change है. So basically, your rate of change in delta, can I say it is 0.0006 for every 1 point change in underlying? तो कैन आई से अगर 100 रुपया से अंडरलाइंग बढ़ा है एंड यू मल्टीप्लाई दैट बाय 0.0006, यू विल गेट 0.06. ऑल यू हैव टू डू इज, ये जो आपका 0.45 जो डेल्टा था उसमें आपको 0.06 ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 0.51. एंड कैन आई से एट 24,450 my same strike which was at the money then will now become in the money. Understood guys? How did I get this 0.51? For the ones who didn't get the answer, it's completely fine. Okay, it's okay, you tried, that is important. So don't worry whether you got your answers wrong or this thing. The fact of the matter is you tried. I mean, that is what was important. So exactly, yes, 0.45, 100 point बड़ा और गामा कितना है? 0.0006 for every 1 point change in underlying. तो अंडरलाइन कितना बड़ा? 100 पॉइंट. तो 100 into 0.006 comes to 0.6. You add that 0.6 to that original delta which was 0.45. तो अगर आप देखोगे आपका जो ये एट द मनी था वो अभी इन द मनी हो गया. इसके लिए आप देखोगे डेल्टा भी 0.5 से ऊपर बढ़ गया. नाउ कैन आई से जितना ज्यादा तेजी से आपका ये गामा बढ़ेगा, राइट नाउ इट इज 0.0006, जितना तेजी से आपका गामा बढ़ेगा कहना है, उतना ही तेजी से आपका डेल्टा बढ़ेगा. एंड जितना तेजी से आपका डेल्टा बढ़ेगा उतना ही तेजी से आपका जो है आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा. इज दैट पार्ट क्लियर? यस अभिजीत जी, गामा गिव्स अ प्रेडिक्शन ऑफ डेल्टा, देयरबाय डिटरमाइंस द चेंज इन प्रीमियम. परफेक्ट अभिजीत जी. अंडरस्टूड गाइस, ये गामा कैसे कैलकुलेट होता है? So we just discussed delta, we discussed theta, and we discussed gamma as well. All good until now? So you see, it's very simple. These are what you need to know about option Greeks. ये तो है इंडिविजुअल लेवल पे, बट मार्केट्स में ऑल दीज ग्रीक्स वर्क टुगेदर. ऐसा नहीं कि आप इसको आइसोलेशन में ही देख सकते कि हाँ मैंने सिर्फ गामा ही देखा, मैंने सिर्फ डेल्टा ही देखा. यू हैव टू लुक एट ऑल द ग्रीक्स इन टैंडम. योर 0.51 चंद्रशेखर जी, नॉट 0.15. इज द गामा पार्ट क्लियर? Right now it is 211 Joey ji. I am saying after 100 points movement when 24,350 से 24,450 जाएगा तब आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा? From 211 it might go to 256 because the delta is 0.45. And at the same time अभी डेल्टा जो 0.45 है वो 100 points movement के बाद आपका हो जाएगा 0.51. Is that part clear guys? Is the delta part clear? If you all can give me a heads up. Now, what is Vega, guys? Now, let's come to the fourth part of the options Greek. So, how do you remember this? D for delta, T for time decay, T for theta. Gamma आपको याद करना पड़ेगा. It is a second order derivative and delta is first order derivative. How much gamma will be after? See, gamma तो depends. So, gamma तो आपको हर एक strike price का मिलेगा यहाँ पे 0.06. So for every 100 points you have to see what the gamma is. तो जितना ज्यादा आपका गामा होगा उतना ज्यादा आपका डेल्टा बढ़ेगा, और जितना ज्यादा डेल्टा बढ़ेगा उतना आपका प्रीमियम बढ़ेगा. यहाँ पे अभी वो कितना गामा कितना बढ़ेगा वो आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा, बिकॉज डेल्टा के नीचे गामा, अभी गामा कितना से बढ़ेगा, यू हैव टू गो इवन डीपर.
सो यू हैव टू गो टू अ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नाउ, तो आपको पता चलेगा ये होने से गामा कितना बढ़ेगा, गामा होने से डेल्टा कितना बढ़ेगा, और डेल्टा होने से आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा. सो हम लोग थर्ड ऑर्डर पे नहीं गए, वी आर जस्ट एट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कमल जी. ठीक है. सो वेगा मतलब V स्टैंड्स फॉर वॉलिटिलिटी एंड V स्टैंड्स फॉर वेगा. इसका मतलब है कि फॉर एवरी 1% चेंज इन योर इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी गाइस, आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा. इट इज एज सिंपल एज दैट. बेसिकली आपको वेगा ये बताता है कि अगर मेरा जो इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी है वो 1% से ऊपर गया तो मेरा प्रीमियम है वो कितने से ऊपर जाएगा, या 1% से मेरा वॉलेटिलिटी कम हुआ तो मेरा जो प्रीमियम है वो कितने से घटेगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. Let's take the same example, guys. 24,350. What is the IV for 24,350 here? If you all can give me a heads up in the chat box. Can you see the IV here for 24,350 call? That is around 17.56%. ये percentage terms में. And what is the Vega for 24,350 call, guys? The Vega is 14.2. For 24,350, the Vega is 14.2, while the implied volatility is 17.56%. Now, what does Vega say? Vega says for every 1% change in implied volatility. मतलब अभी IV 17.56% है. मान लो ये 17.56 से 1% बढ़कर हो गया 18.56%. So obviously your premium will change. This 211 won't remain the same. Can anyone tell me अगर ये 17.56% से बढ़कर हो गया 18.56%, that is 1% change, and the Vega is 14.2, can anyone tell me what will be my premium if there is 1% change in implied volatility, that is Vega? Let's see who can give me the right answer for this. अभी 211 है, implied volatility 17.56% है. अगर ये 1% से बढ़ गया 18.56 और मेरा वेगा है 14.21, सो कैन एनीवन टेल मी मेरा प्रीमियम जो 211 है वो बढ़कर कितना आ जाएगा अगर मेरा वेगा 14 रुपया 21 पैसा है. अब it's important to check the Greeks, Snowbear ji, but I know for a fact that trading में we don't get that time to, but it's important that you know what these Greeks are and how it can have an impact on your options premium. So whenever you feel that your premiums are not moving in sync with the underlying, or there is a lot of time that is taken, you know there is some other factor that is in play, so that you know you have an idea of option Greeks as well. Jawar ji saying 29.54. No, guys, my Vega is 14.2 and my IV is 17.56%. मतलब 1% से बढ़ा तो मेरा प्रीमियम 211 से बढ़कर कितना हो जाएगा? It's simple, guys. Come on, let's see who can give me the right answer. My Vega is 14.21 points and my current premium is 211. और मान लो कि मेरा implied volatility है 1% से बढ़ गया है. You see, sometimes the volatility goes up, sometimes the volatility goes down. And here my volatility has gone up from 17.56. Let's say it goes to 18.56. Any answers, guys, in the chat box? Let's see who can give me an answer. मेरा प्रीमियम बढ़कर कितना होगा? How much will that 211 change into if my volatility rises up by 1% and my Vega is 14? Come on, guys, wrong answers are okay, but I want everyone to give me an answer in the chat box. Let's see how many of you all can take the right guess. Any answers, guys? I'm waiting for your reply. Okay. I guess nobody wants to try. Okay, so the Vega is 14.21, guys. The current premium is 211. Your call IV is 17.56. That means if it rises up by 1%, you just need to add 14 points, guys. Because अगर मेरा Vega है 14, अभी current premium है 211, all you have to do is add 14.21 to 211. So that 211 will go to 225, not 232, guys. It's 225.21 because the Vega is 14.21 and current premium है 211. So you add 14.21 and your premium, your new premium will be at 225. अभी जो 211 है
अगर वॉलिटिलिटी 1% से बढ़ता है, it goes to 225. How did I get 225? I just added 14.21 to my existing premium. And मान लो आपका 1% से वॉलिटिलिटी घट गया, so how much will that Vega change? So the 211 से आपका जो Vega, you have to subtract 14.2, you have to subtract your Vega, so your new premium will be 196.79. अगर 1% बढ़ा, you add Vega to the premium, और 1% घटा, you deduct Vega from the premium year. So D for delta, D for direction, T for theta, T for time decay, V for volatility, and V for Vega. Is the Vega part clear, guys? If you all can give me a heads up in the chat box. All good until now? Understood the Vega part? And the last part is the row part here, guys. So row is not very commonly used, option Greek when it comes to Greeks. But row, जैसे interest rate. So R stands for rates, interest rates. So R for rates and R for row. So that's how you can remember. So row will help you understand how interest rate fluctuations can impact options pricing. तो इसका मतलब है, for every 1% change in interest rates, guys, because the interest rates जो है, it doesn't change very often. So for every 1% change in interest rates, how much will your premium move up and down? So that is what, for that we look at row. So usually, like I said, interest rates, they often remain stagnant for many months, and hence rho doesn't generate the same type of buzz as delta, theta, gamma, and Vega. So Vega मतलब every 1% change in volatility से आपका प्रीमियम कितना ऊपर नीचे जाता है. सिमिलरली रो आपको बताता है कि every 1% change in interest rate से आपका प्रीमियम कितना ऊपर नीचे जाता है. डेल्टा आपको बताता है फॉर एवरी 1 रुपी चेंज इन अंडरलाइंग आपका प्रीमियम कितना ऊपर नीचे जाता है. गामा बताता है फॉर एवरी 1 रुपी चेंज इन अंडरलाइंग आपका डेल्टा कितना ऊपर और नीचे जाता है. और टीटा बताता है एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम एज एंड व्हेन यू मूव क्लोजर टू एक्सपायरी, आपका जो ऑप्शन प्रीमियम हो कितने से डीके होगा. इज दैट पार्ट क्लियर, गाइस? सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑप्शन ग्रीक्स. तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले हमने डेल्टा देखा, फिर हमने टीटा देखा, फिर हमने गामा देखा, देन वी अंडरस्टूड वेगा, एंड देन वी अंडरस्टूड व्हाट इज रो. I hope this webinar on options Greeks was informative, guys. I hope अभी आपको शायद एक basic understanding मिल गया होगा कि ये option Greeks क्या है, and what does this option Greeks mean. अभी कल अगर आपको कोई पूछे भी कि ये डेल्टा क्या होता है, टीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, वेगा क्या होता है, रो क्या होता है, you can check the interest rates. I mean, the current interest rates that you see, the RBI rates, the repo rates, those are your current interest rates. So right now it is at around what, 6, it reduced, right? 5.25, 5%. What is not 5%? I think 5.25, 5.5, 5.25. Can you please repeat theta? So theta basically it means, so right now you see DKG, see this is theta. Let me go to that example. See, right now my current market price is 24,350. And the theta for 24,350 was minus 15. So basically what theta means is, let's say there is no movement in underlying. Let's say there is no movement in volatility. Let's say there is no movement in interest rates, and everything else has remained unchanged, and the price and there is no movement in underlying as well. It will tell you how much will this 211, how much will the premium decay for every day you get closer to expiry. So right now you see we are on 30th April. We have 8 days to go, and currently my theta decay is 15. It means every day my premium will decay by 15 points. So at the end of today, let's say 211. So by the end of the next day, it will be 211 minus 15. Now next day you will have only 7 days left for expiry. So as and when you move closer to expiry, let's say the theta might go to 25. So the next day it will be 211 minus 15 minus 25. So it will be the rate of change of decay for every time, for every passage of time DKG. So that is what theta is all about. कि आपका प्रीमियम कितने से डीके होगा if everything else remains unchanged. Is that part clear, DKG? Rinesh ji, see, you can go to SBI Securities YouTube channel.
वहाँ पे ये जो आज का सेशन है, that you can see that again and you can just brush up on the concepts again whenever you want to, because that will stay on our portal. So you can go to SBI Securities, you will find the live tab there, and you can just go there and you can check all these videos here. See, no impact on selecting premium. No, Theta is nothing for that. So usually for option selling, people usually prefer out of the money options, because the delta for out of the money options is less, and also the Theta, if you see, it is slightly lesser. For buying, usually at the money and in the money is preferred, but for selling, usually it's the deep OTMs that are preferred here. Clear, all good, guys. So I hope this today's session on option Greeks was informative. So next week we'll meet again on Wednesday at 4 o'clock. And one important information is that so tomorrow there's a trading holiday on account of Maharashtra Day. So tomorrow the markets will remain closed, and the markets will resume on Friday. And next Wednesday we'll be meeting again, guys, and we'll be discussing one important trading strategy, which is about RSI. So it will be a good one. It is one strategy that you can use for spotting reversals. So I hope you all join that session as well. Is there any concept for selling straddle in Greeks? So yes, there are people who look at Greeks and then see, usually if you see, the time value is highest for at the money. So even if you see a lot of straddles that are sold, it's usually at the money call sell and at the money put sell. So अगर एक दोनों अगर if the price remains at the same range and if there is no such movement in the underlying, the chances are that the straddle will actually benefit you. It will actually make you, that straddle will be profitable here. So yeah, that is why you'll see majority of them, they usually go for at the money straddles, because at the money will usually have the highest time value here. But again, there is no particular, straddle strategy. But in Greeks, no any particular thing that you need to look in for that. Greeks are available in SSL app, but it's difficult to use them for trading. An example will help more. So we'll have a lot of advanced webinars also in the future, guys. So this is just a basic understanding of Greeks. What does this different Greeks mean? अगर आपको इतना भी समझ जाए तो it's like, it's more than enough. Uh, that this knowledge itself will actually help you in selecting the strike prices here. How to trade long-term options like December? It's very tricky to trade long-term options, provided you are very sure about where the market is going to go. So again, you'll have to look at Greeks. You'll have to see the delta. I'm not personally, I'm not very much in favor of long-term options. But we can definitely have a session on how to trade long-term options, Ram Mohanji. So I mean, that will be a separate webinar, and we can have a separate discussion on that altogether. Okay, so all good, guys. Theta is important. See, for momentum, the delta and gamma is very important, Snowbearji. Theta is important only when you know that there is no movement in underlying and you want to know how much your premium is going to decay. अगर momentum है तो it's the delta and gamma that matters, because for momentum those are the two Greeks that are important. But especially if you want to know about theta important, तो आपको देखना पड़ेगा, अगर आज का मार्केट ही देख लो, जैसे 24,350 के आसपास ही था ना, ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, तो आपको उससे पता चलेगा कि हाँ इसका थीटा क्या है. तो एटलीस्ट अगर उस दिन अगर आपने ऑप्शन सेलिंग कर दिया, so you can get an idea of how much your decay can happen with respect to the premium there. Okay, so that's all from my end, guys. I hope the webinar was informative, and see you all next Wednesday. So next Wednesday again, we are going to have a webinar on RSI. So every Wednesday from 4 to 5, we'll have a webinar, guys. And soon, there's a new initiative that we are going to start. I think probably from next week onwards, every Monday we'll have a mid-market YouTube live session, guys. Wherein myself and Sudeep sir will be joining in live, wherein we'll discuss about the markets, we'll discuss about the sectors that are in play, we'll discuss about some key levels, we'll discuss what the option data is indicating, we'll discuss about the global markets, what are the macro factors indicating, what are the FIIs doing.
So every day there'll be this mid market session that will happen from 12:30 to 1. So do join for those mid market sessions as well, because that time we won't be discussing anything that is educational. We'll be just talking about markets. We'll talk about Nifty, Sensex, Bank Nifty. What are the key sectors? We'll also talk some of the stocks that are looking good from a short term perspective, which are looking structurally good. Those are the stocks that we will be discussing there. So those mid market session will start soon, guys, and I hope to see you guys there as well. Okay, so that's all from mine, guys. Happy holiday tomorrow. See you all next week on Friday. Until then, take care and stay safe, guys. See you all soon. Bye, guys. Take care.